Assalamu alaikum and welcome. So today we are going to declassify what actually is required to be covered under the scope of the waterproofing and dampproofing. The purpose of doing this video is to clearly and completely understand the scope which is to be done by the waterproofing subcontractors. There in the trades of construction in the USA we have a subcontractor uh, who does only the work of the waterproofing, and what will be the scope of it. Let's declassify. So first of all, let's look at the definition of the waterproofing. Waterproofing is the process of making an object or structure waterproof or water resistant so that it remains relatively unaffected by water or resisting the ingress of water. So simply saying, as the name suggests, waterproofing is for the purpose of either stopping the water to penetrate into the building, or just accumulate somewhere, or just penetrate through the partitions we have from the external environment of the structure. So there can be multiple options and the multiple locations where the waterproofing has to be done. First one is the cementitious waterproofing, liquid waterproofing, bituminous coating, and bituminous membrane waterproofing. Let's deep dive into it and see what the scope and what are the locations which need the waterproofing scope to be covered. First of all is the waterproofing and the dampproofing. What are the trades which needs the waterproofing to be done for them? So it includes the side concrete. On the side concrete we have the pavements, the sidewalks, the curbs, all kind of related stuff which needs the sealants or other kind of water stop materials, so the water can't penetrate through those concrete items. Uh, on the site, it must not be limited only to the concrete portion, but also the bollards, the posts, or any other kind of, for example, the dumpster enclosure. We have the dumpster enclosure structure where we have the walls of it, the foundation of it. So at the parameter where the walls touch the ground, they have to be sealed properly so the water can penetrate in and out through the dumpster enclosure. So that's how we have multiple things on the site which needs the waterproofing. Then is the building concrete. On the building concrete we have footings, the slabs, and isolated footings, other kind of footings. So those need to be waterproof using the water stop materials, vapor barriers, the sealants, etc. kind of stuff. Then is the masonry. On the masonry we have masonry CMU walls at the footings or above the ground, but they have the joints in them which need to be sealed so the water can't penetrate through. Similarly, then फसाद पे भी आपके पास डिफरेंट फिनिश मटेरियल होते हैं, द साइडिंग, द स्टोन, द ब्रिक्स, द पेंट, द स्टुको एटसेट्रा काइंड ऑफ फिनिश मटेरियल. सो उनमें भी आपके सीलेट्स यूज़ होते हैं टू वाटर प्रूफ इट. Then the openings, the doors, the windows, the roof hatches, the louvers, उनके अराउंड आपके सीलेंट यूज़ होते हैं जो इसको वाटरप्रूफ बनाते हैं. देन इज़ द रूफिंग. ऑन द रूफिंग एज हमारे पास कुछ पेनिट्रेशंस होती हैं थ्रू द रूफ. देन वी हैव द पैरापेट जहाँ पर फ्लैशिंग सीलेंट्स एक्सेट्रा काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं जहाँ पर वाटरप्रूफ करना हमारे लिए ज़रूरी होता है. Then is the MEP. Obviously, each room has to have some kind of penetrations for the electrical installation, mechanical installation, plumbing installation. For example, let's take an example of a restroom where we have to install the lights, obviously, so there would be penetrations for the electrical wires to come in and go out. Similarly, the plumbing connections, the hot water, the cold water pipelines have to come in, and the sanitary wastage pipes have to go out. So those have to be sealed. Similarly, the HVAC version, which includes the exhaust fans kind of stuff.
so those also needs to have the waterproofing around it. Then as the special construction may include a pool, a special construction may include a balcony, special construction may include a terrace, special construction may include a patio, all kind of stuff. So all those need some kind of waterproofing materials. In general, I would say the whole structure is going to be waterproofed using different kind of sealants, the flashings, the water stop materials, the vapor barriers, the coating, the bituminous coating, hot applied, spray applied, or any other stuff. So this is what all about in the waterproofing section. So let's get specific to each trade. For example, the first one is the concrete. In the concrete, we can have the vapor barrier, which is laid under the concrete slab throughout, so the water can penetrate uh, through the soil and into the concrete above. So what happens is कि आप एक शीट जिसको और वेपर बैरियर जिससे उसकी थिकनेस होती है इन 1000 और 1 millionth ऑफ एन इंच आई गेस, तो वो 6 mil 10 mil उसका वेपर बैरियर यूज़ होता है. लेट्स सी व्हाट इट एक्चुअली इज. सो कंक्रीट वेपर बैरियर, सो इट्स काइंड ऑफ अ शीट जो आपके कंक्रीट स्लैब के नीचे ले की जाती है ताकि वाटर ऊपर पेनिट्रेट ना कर सके. और समटाइम्स इन द हॉट वेदर जिससे कि आपके जो बिलो द ग्राउंड वाटर होता है वहाँ से वेपर्स आते हैं जो कि कंक्रीट में आ सकते हैं, तो उनको स्टॉप करने के लिए आपका वेपर बैरियर यूज़ किया जाता है. यहाँ पर मॉइस्चर बैरियर यूज़ किया जाता है. देन इज़ द कंट्रोल जॉइंट्स. कंक्रीट में यूजुअली क्या होता है, आफ्टर वी आर वेल अवेयर कि एक्सपेंशन जॉइंट्स और कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द रीज़न कि अगर कंक्रीट ब्रेक हो तो वो उसकी ब्रेकेज कंटिन्यूटी थ्रू आउट द कंक्रीट स्लैब ना जाए बल्कि वो लिमिट हो जाए उसी ब्लॉक में. तो इसलिए सम काइंड ऑफ कंट्रोल जॉइंट्स एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनमें सीलेंट्स को फिल किया जाता है ताकि आपका वाटर पेनिट्रेशन उन ओपनिंग्स से ना हो. देन इज़ वाटर स्टॉप. वाटर स्टॉप इज़ वन मटीरियल which is very specific in some of the projects to be used. What happens is it's kind of like a rubber or kind of a thicker sheet or a foam you can say. ये ले किया जाता है, it's kind of a plastic. तो ये जहाँ पर आपके वाटर जहाँ पर कंक्रीट के पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है ताकि वाटर पेनिट्रेशन वहाँ से ना हो. Let's take a look at this. Usually वाटर टैंक्स उनके अराउंड किया जाता है, तो वाटर टैंक्स के अराउंड जो पैरामीटर है वहाँ पर ये वाटर स्टॉप लगा दिया जाता है और उसकी वजह से वाटर पेनिट्रेशन नहीं होती. Let's move to the next. Then is the masonry. On the masonry we have similarly अगर आपका एक्सटीरियर फसाद एक्सपोज्ड है या इवन फुटिंग्स में भी है तो उसके ऊपर आप वेपर बैरियर या मॉइस्चर बैरियर इंस्टॉल करोगे ताकि वाटर्स आपका उसमें पेनिट्रेट ना करे. Then is the fluid applied waterproofing, which is some kind of like paint. You just apply the fluid over the CMU face, so it is waterproof. Similarly, bituminous waterproofing, ये जो लोकल टर्म में हम इसको लुक कहते हैं, तो यहाँ ये लुक कहते हैं और ये आपकी जैसे पेंट अप्लाई करते हैं वैसे ही आप वॉल पर कर देते हो तो वो वाटरप्रूफ हो जाती है. देन अगेन मेसनरी CMU वॉल्स में भी कंट्रोल जॉइंट्स भी आते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स भी आते हैं, तो उन पर जो सीलेंट्स यूज़ होते हैं उनको वाटरप्रूफिंग के स्कोप के अंडर वो आएंगे. सिमिलरली इन फसाद, आपका जो फसाद पर फिनिश मटेरियल्स हैं, लेट्स से पैनल्स हैं, अब पैनल्स जहाँ पर जोड़े हैं वहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है, वहाँ उसको सील करने के लिए सीलेंट्स को यूज़ किया जाता है. सिमिलरली लेट्स से अगर फसाद पर ब्रिक्स हैं और एक एंड पर उसके ब्रिक्स हैं और एक एंड पर उसके लेट्स से स्टोन है, तो
वो डिफरेंट डिसिमिलर मटेरियल्स आ गए हैं, तो वहाँ पर भी सीलेंट यूज़ किया जाता है। इसी तरह से लेट्स से आपके पास टुको या इफस है, और सेकेंडली आपके पास स्टोन है, और वो जहाँ भी ट्रांजिशन बना रहे होंगे वहाँ पर भी हमें सीलेंट अप्लाई करेंगे। तो बिटवीन द डिसिमिलर मटेरियल्स एंड अमंग द सिमिलर मटेरियल्स, हम दोनों पर सीलेंट्स को जहाँ जहाँ पर ट्रांजिशंस आते हैं वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। Thirdly, we have the openings, doors, windows, roof hatches, lures, सब के अराउंड कोई ना कोई वाटरप्रूफिंग मटेरियल यूज़ होता है, जिसको आप फ्लैशिंग भी कह सकते हो। फ्लैशिंग एज लाइक मेटल फ्लैशिंग यूज़ होती है, और ड्रिप एज फ्लैशिंग, और सेकेंडली सीलेंट्स यूज़ होते हैं, जिसको कॉकिंग भी आप कह सकते हो। कॉकिंग इज़ काइंड ऑफ अ ग्लू और द सिलिकॉन मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं अराउंड द doors and windows. This is the caulking material. So these sealant materials are used around each kind of finished material. देन एंड द रूफिंग में भी इसी तरह से जब आपकी फाइनल शीथिंग इंस्टॉल हो जाती है तो उसके ऊपर जो वेपर बैरियर है वो स्कोप में आपके आएगा। देन अगर कोई पेनिट्रेशन है, कोई पाइप है, कोई वेंट थ्रू है, कोई चिमनी है, उसके अराउंड सीलेंट्स यूज़ होंगे। इसी तरह से वहाँ पर अगर कोई आपके जॉइंट्स आ रहे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स आ रहे हैं, कंट्रोल जॉइंट्स आ रहे हैं, वो आपके इंक्लूड होंगे। इसी तरह से आपकी जो पैरा पैरापेट्स हैं उसके ऊपर जो मेटल फ्लैशिंग्स आ रही हैं, बैकर रोड्स आ रहे हैं, सीलेंट्स आ रहे हैं, वो आपकी काउंटर फ्लैशिंग्स, हर तरह की जो भी आपकी वाटर प्रूफिंग रेजिस्टेंट मटेरियल्स होंगे वो आपके रूफिंग के सब वाटर प्रूफिंग के स्कोप में आएंगे। देन वाटर प्रूफिंग ऑन द साइड, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो जो मटेरियल्स आ रहे हैं उस पर ड्राइंग्स में शो किया होता है कि किन लोकेशंस पर वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज़ होने हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। देन एज द टर्म्स टू सर्च इन द ड्राइंग्स, it is very much difficult, not difficult, but I would say there are certain locations where or certain locations or the certain details where the waterproofing scope is detailed out. So in order to find those, what we need to do is हम PDF drawings में कुछ terms को search कर सकते हैं through which we can easily find out where those scope can be found. सो जो टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो उसमें है, नंबर वन इज़ द जॉइंट यूज़ करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली मूव यू टू द लोकेशंस जहाँ पर कंट्रोल जॉइंट्स लिखा होगा, जहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स लिखा होगा, जहाँ पर सीलेंट जॉइंट्स लिखा होगा, या कुछ भी रिलेटेड टू जॉइंट होगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली अप्रोच कर लोगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इफ़ दिस वाज अंडर योर स्कोप और नॉट फॉर द वाटर प्रूफिंग। सिमिलरली सीलेंट सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल लोकेशंस पर सीलेंट यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से आपको सर्च करना चाहिए बैकर रोड और बैकर। यू कैन सर्च बैकर, तो बैकर रोड यूज़ हो रहे होते हैं वो आप कर सकते हो। देन E.J. यूजुअली वो इसका शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, तो E.J. आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपेंशन C.J. फॉर द कंट्रोल जॉइंट्स, फिर कंट्रोल आप सर्च कर सकते हो, फिर आप वाटर सर्च करोगे, फिर आप प्रूफ सर्च करोगे, कोट, फ्लूइड, बिचुमन, आप ये वर्ड्स सर्च करोगे तो यू कैन सिंपली एंड वेरी इजीली find out the locations where the waterproofing scope will be used. Then is the related specs, आपको specs go through करने पड़ेंगे जिसमें आपकी जो भी ट्रेड्स हमने मेंशन किए हैं, जिसमें कंक्रीट, मेसनरी, डिवीजन 7, 9 एक्सटीरियर इम्प्रूवमेंट्स यूज़ होती हैं। देन एज द ड्राइंग्स एंड द स्पेक्स रिव्यू, तो एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं, बट उससे पहले आफ्टर एन ओवरव्यू ऑफ दिस कि क्या क्या लोकेशंस और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए, आई वुड लाइक वी रिव्यू some of the subcontractor codes which are related to the waterproofing materials. So first of all, एक कंपनी है जो कि कोड उसका हमें क्लाइंट ने शेयर किया,
और उसमें उसने हमें कोड दी। अब ये कंपनी ही कॉकिंग एंड वाटरप्रूफिंग के नेम से है और ये यही स्कोप कवर करते हैं। तो उन्होंने जब ये कोड हमें सेंड की, तो कोर्ट में हमें क्या रिसीव हुआ, कोर्ट में उन्होंने स्कोप को आउटलाइन किया कि हम ये आइटम्स कवर करेंगे और उसकी प्राइस इतनी होगी। उसमें क्या क्या था, एक्सपेंशन जॉइंट्स एज कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, सिमिलरली सीलेंट एट बिल्डिंग पैरामीटर एंड पेवमेंट्स, सिमिलरली सीलेंट बिल्डिंग एक्सटीरियर penetrations, control joints in masonry, joints between metal panels, sealant and doors and windows, and sealant at only the exterior doors and windows, not on the interior. Waterproofing system at below grade CMU and footing as shown on the plans, which will include the vapor barrier, water stop, etc. kind of stuff. So इनकी कोट से हमें आइडिया हुआ कि वाटरप्रूफिंग के सब कॉन्ट्रैक्टर क्या कवर करते हैं। सिमिलरली लेट्स लुक एट अनदर कोड वी हैव। तो इसमें हमारे पास जो स्कोप रिसीव हुआ उसमें हमारे पास है अच्छा, अब ये सब कॉन्ट्रैक्टर है मेजनरी, मेजनरी कॉन्ट्रैक्टर है और उसने हमें कोड सेंड किया। अब जब उसने कोड सेंड की तो उसने अपने कोड में वो फुली इंक्लूड कर दिया। लेट्स सी क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो एक्सटीरियर ब्रेक्स, इंटीरियर ब्रेक्स, लेबर दिस, क्लीन दिस, alternate cause, galvanized metal flashing at draw lock and base of the building, this तो this quote states कि हम ये ब्रेक्स इंक्लूड करेंगे प्लस फ्लैशिंग हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इट मीन्स a little scope of work which is related to just the masonry scope, जो कि एक वाटरप्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आना था, वो ब्रिक कॉन्ट्रैक्टर ने ऑलरेडी कवर कर दिया। व्हाट हैपन्स एक्चुअली इज, एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर के पास सब कोड्स रिसीव होती हैं सब कॉन्ट्रैक्टर से। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि आपके जब उसको कोड्स रिसीव होती हैं, लेट्स से एक कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कोड सबमिट की। अब वो कोड जब सबमिट की तो उसमें उसने मेंशन कर दिया कि मैं कंक्रीट इंस्टॉल करूँगा और ये सब कुछ करूँगा, प्लस मैं कंक्रीट में जहाँ जहाँ पे सीलेंट्स यूज़ होने हैं वो भी मैं करूँगा। तो इट मीन्स के कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर ने ये कोड सबमिट कर दी। लेट्स से अब मेजनरी कॉन्ट्रैक्टर आया और उसने कहा कि मैं मेजनरी ब्लॉक्स आपके सारे के सारे CMU वॉल इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन मैं सीलेंट्स को फिल नहीं करूँगा। थर्डली ओपनिंग्स कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा मैं डोर्स एंड विंडोज़ इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन मैं सीलेंट्स इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो व्हाट हैपन्स इज, जनरल कॉन्ट्रैक्टर जब अपनी कोड्स या अपनी प्राइस सबमिट बिड एस्टिमेट फाइनल कर रहा होगा, वो क्या करेगा कि सीलेंट्स जितने भी हैं, लेट्स से कंक्रीट वाले ने सीलेंट्स कवर कर दिए, मेसनरी वाले ने सीलेंट कवर नहीं किए थे। थर्डली ओपनिंग्स वाला भी आया, उसने कहा कि मैं सीलेंट्स नहीं करूँगा, जस्ट डोर्स एंड विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर के एंड पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो ये आएगी कि जो उसको सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ वाटर प्रूफिंग से कोड हुई होगी, उसमें उसने मेंशन किया होगा कि मैं हर जगह पर सीलेंट करूँगा। तो वो क्या करेगा, वो उनको कांटेक्ट करेगा और उनसे कहेगा कि मुझे आप कंक्रीट के सीलेंट्स के अलावा बाकी सब सीलेंट्स और वाटरप्रूफिंग स्कोप से रिलेटेड कोड मुझे सबमिट कर दें। द रीज़न इज़ कि कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कोड जब सबमिट किया है तो उसने ये कहा है कि मैं सब कुछ सीलेंट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटरप्रूफिंग स्कोप मैं वो कम्प्लीटली कवर करके दूंगा आपको वाइल इंस्टॉलिंग द कंक्रीट। तो उससे क्या हुआ कि उससे कंक्लूजन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हम ये ट्रेड कवर करेंगे प्लस इससे रिलेटेड जो सीलेंट्स हैं उनको भी कवरिंग करेंगे। बट अदर टाइम्स व्हाट हैपन्स एज कि कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हम वो चीज़ तो इंस्टॉल कर देंगे लेकिन उससे उससे रिलेटेड सीलेंट्स नहीं करेंगे। तो वहाँ पर स्कोप क्रिएट होता है वाटरप्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर का, जिनके पास एक जिनके पास जो स्कोप होता है वो सीलेंट्स का होता है
वाटरप्रूफिंग का होता है थ्रू आउट द कंप्लीट ट्रेड्स ऑफ द बिल्डिंग। तो फिर उसमें उनको चूज़ करना होता है कि अच्छा जीसी के पास कोड्स रिसीव हुई हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा है हम सीलेंट कर देंगे और कुछ कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। तो हमारी जो कोड सबमिट होनी चाहिए वो उन ट्रेड्स के लिए होनी चाहिए जो कि वो नहीं करेंगे। बट एज ए जनरल जब हमें रिक्वेस्ट की जाएगी कि वी नीड द स्कोप फॉर वाटर प्रूफिंग, तो हम completely ऑल ट्रेड्स के लिए कवर करेंगे वाटर प्रूफिंग स्कोप। ओके, सो दिस कोड इज डन। नेक्स्ट, सो दिस इज डेकोरेटिव कंक्रीट सरफेस। अब ये कंक्रीट की एक, ओके, सो कंक्रीट की एक ये कोट है जिसमें हमारे पास उसने मेंशन किया है कि स्कोप ऑफ वर्क में हम कवर करेंगे जॉइंट्स जॉइंट्स को क्लीन करेंगे और पॉलीयूरिया यूज़ करेंगे, होल्स को रिपेयर्स करेंगे, दिस। सो दिस है कि हम टॉप कोट ऑफ आर्मर टॉप। सो दिस इज़ नॉट वेरी मच स्पेसिफिक जिससे हम कोई ना कोई कंक्लूजन बना सकें। लेट्स सी अनदर कोट, अनदर कंक्रीट कोट। कंक्रीट में ये कह रहे हैं कि वी विल सुपरवाइज अपग्रेड ये एज फॉर्म्स 10 मिल वेपर बैरियर, हम वेपर बैरियर भी इंस्टॉल करेंगे। तो ये सब कुछ कवर करेंगे। वी हैव नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग। आप कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि हम कोई भी कॉकिंग, वाटर प्रूफिंग, सीलेंट या स्टेन्स हम कवर नहीं करेंगे। इट मीन्स कि अब ये वाटर प्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में आ जाएगा। Okay, we have seen this. Next is concrete. कंक्रीट का प्रपोज़ल आया है और उसमें हमारे पास है टायर्स हैं, डावल्स हैं, एक्सकवेशन है, सुपरविजन। वी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड द फॉलोइंग। एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? कंट्रोल जॉइंट सीलर और वाटर प्रूफिंग एंड वॉल्स। सिमिलरली डी वाटरिंग, डीमगिंग ऑफ एनी ग्राउंड, और इट मीन्स जो मेजर पॉइंट था वो यही था कि ये सीलेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे अपनी कोड में। तो इट मीन्स के सब कॉन्ट्रैक्टर जो वाटर प्रूफिंग का होगा वही कंक्रीट के भी प्रॉपर है। लेट्स सी अनदर कोड, फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग में है तो फ्लोरिंग में पैनल्स हैं, पॉलिश फ्लोर है, दिस वो कह रहे हैं ये फ्लोरिंग्स करेंगे, ग्राइंडिंग, पॉलिश, ये वो। जनरल नोट्स, ऑल प्रिपरेशन। Caulking is not included in our proposal. See options above. It means कि जो फ्लोरिंग भी कर रहा है वो भी ये कह रहा है कि मैं caulking को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो जस्ट एज अ समरी आई वुड से कि समटाइम्स जो ट्रेड्स होती हैं, कंक्रीट, साइड कंक्रीट, लाइक MEP, ओपनिंग्स, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि हम इसके साथ वाटर प्रूफिंग की भी सर्विस आपको कंप्लीट करके देंगे। अदर टाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ वो कहते हैं कि हम सीलेंट्स का स्कोप कवर नहीं करेंगे, उसके अलावा जो इंस्टॉलेशन है वो हम कम्प्लीटली कवर कर देंगे। तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि वाई द सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ जस्ट द वाटर प्रूफिंग एंड द सीलेंट्स एग्जिस्ट, क्योंकि बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर्स उसको इग्नोर कर जाते हैं। Similarly, let's see this one. अब ये एक वाटर प्रूफिंग कंपनी है। What they say is joint sealants हम कहाँ कहाँ पर कवर करेंगे। जिसमें concrete to building and dumpster enclosure walls, vertical exterior brick to cedar siding, exterior facade, brick control joints को करेंगे और hollow metal doors को करेंगे। building slab पर भी हम कर देंगे लेकिन उसके लिए ये प्राइस होगी। तो it means कि वो ये कवर करेंगे जिसमें क्या कि आपके पास आ गया कंक्रीट, एक्सटीरियर फसाद और ओपनिंग्स। तो ये सब का सब स्कोप एक सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आ गया। तो दिस इज़ हाउ अ सब कॉन्ट्रैक्टर कोड इज़ प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स मूव टू वन ऑफ द ड्राइंग्स ऑफ अ प्रोजेक्ट and specifications where we can see and understand कि how
the scope has to be covered. First of all, let's review the specifications. It is always essential and important that we go through the specs, which makes it very clear for us to understand the scope of work to be covered in a specific trade or in all the trades. So let's move to the concrete. अब concrete में क्या आ रहा है? Under slab sheet vapor barrier, which falls under the concrete contractor actually, but sometimes what they do is they say कि we are not going to do this, so this has to be covered in the waterproofing subcontractor scope. तो let's say हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं as कि हमने waterproofing subcontractor के लिए estimate प्रिपेयर करना. तो first thing we will do is under slab sheet vapor barrier, concrete topping and cement based underlayment. So let's move to the division 3. So here we have division 3 started. Here first is the concrete forming and accessories, जिसमें आपका form work आता है. We will skip this. We will go to under slab sheet vapor barrier और इसकी summary हम देखेंगे. Materials for controlling the vapor barrier, which is concrete slabs on grade. एक ये देखेंगे और secondly यहाँ पर products mention किए होते हैं, हम उनको देखेंगे. ये products हैं. Material क्या हो रहा है? 15 mil poly OLF in film meeting requirements of this. तो this description का हमने vapor barrier यूज़ करना है. That's it. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेट्स मूव टू द कंक्रीट रिइंफोर्सिंग एंड एम्बेड मटेरियल्स. अब ये रिइंफोर्समेंट है और उससे रिलेटेड डॉवर्स हैं काइंड ऑफ थिंग. स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया हुआ है. इसमें एज सच कोई भी आपका वाटरप्रूफिंग स्कोप नहीं होगा. ओके, देन इज़ द कास्ट इन प्लेस कंक्रीट. और इसमें क्या क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में. इंस्टॉल करना है जॉइंट सीलेंट फॉर पार्किंग डेक सीलिंग पार्किंग डेक सर्फेसेस. तो ये स्कोप आपका एक्सपेंशन जॉइंट ट्रैफिक प्लेट वेपर रिटार्डर, ये स्कोप ऑफ वर्क आपका अंडर द वाटरप्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर आएगा. ओके, देन एज वी हैव डिवीजन 4 में है मेजनरी. ओके, सो लेट्स मूव. Now we have moved to unit masonry division. और यूनिट मेसनरी डिवीजन में स्कोप ऑफ वर्क या समरी में क्या है? मेसनरी जॉइंट्स हैं. दिस टायर्स मेसनरी जॉइंट रिइंफोर्समेंट टायर्स एंड एंकर्स एम्बेडेड फ्लैशिंग steel lintels and this. Okay, let's move to the products. Light reinforcement mix design. प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ रहा है यहाँ पर डिफेक्टिव यूनिट्स, कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स, उनकी शेप क्या होगी. इंटीग्रल वाटर रिपेलेंट प्रोवाइड यूनिट्स में इंटीग्रल वाटर रिपेलेंट्स. इंटीग्रल वाटर रिपेलेंट्स मींस कुछ ऐसे मिक्सचर्स या कुछ ऐसी मटेरियल्स जो कि यूज़ होंगे विद मेसनरी और उसको वाटरप्रूफ कर देंगे. इस तरह से लिंटल्स हैं, फेस ब्रिक्स हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं. ये वाटर रिपेलेंट एड मिक्सचर्स एट्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग जो कि हमें डिटेल में देखना पड़ेगा वाइल डूइंग द प्रोजेक्ट. सिमिलरली नेक्स्ट चलते जाएं हम तो वी कैन फाइंड यूनिट मेसनरी आफ्टर यूनिट एडहेयर्ड मेसनरी वेनियर सिस्टम. इसमें ये देखो रिलेट समरी क्या है. एडहेयर्ड मेसनरी वेनियर टू कंक्रीट यूनिट मेसनरी बैकअप. तो इसमें है यूनिट मेसनरी है एंड सेकेंडली जॉइंट सीलेंट्स हैं फॉर द सीलेंट्स. अब ये डिवीजन 7 में फॉल कर रहा है. तो ये आपका जो जॉइंट सीलेंट्स हैं मेसनरी से रिलेटेड वो आपके वाटरप्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर में आएंगे. तो यहाँ से हमें
देखना होता है एक स्कोप ऑफ वर्क, और सेकेंडली उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो उनकी डिस्क्रिप्शन से हमें आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं और क्या यूज़ हो रहे हैं। देन आफ्टर द डिवीजन 4 वी हैव डिवीजन 9। डिवीजन 9 में यूजुअली व्हाट वी हैव इज़ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में यूज़ हो जाता है या जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड जो वॉल्स होती हैं उसमें उसमें सीलेंट यूज़ हो रहा होता है। लेट्स सर्च दिस सब ट्रेड। Guess I can find this in this document. Gypsum board for sound attenuation, not this. Okay.